तलाक उल बिद्दत अपूर्णीय या तलाक उल बैन, ये तलाक या विवाह विच्छेद का एक नापसंद तरीका है। इस तलाक की खास विशेषता ये है कि जैसे कि शब्द उच्चारित होते हैं तलाक प्रभावी हो जाता है और पक्षकारों के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं रहती। शिया कानून के तहत अपूर्णीय तलाक को मान्यता नहीं दी जाती। ये स्पष्ट है कि अपूर्णीय तलाक में पति की अपूर्णीय तलाक की मंशा पर जोर दिया जाता है, जो ये स्पष्ट कर दे कि पति विवाह को अपूर्णीय रूप से भंग करने का इरादा रखता है। तलाक के अलावा मुस्लिम पति अपनी शादी को 2 अन्य तरीकों से समाप्त कर सकता है, अर्थात इला और जिहार। इला और जिहार पति द्वारा रचनात्मक विवाह विच्छेद है। पति स्पष्ट रूप से विवाह को अस्वीकार नहीं करता, लेकिन पति का आचरण ऐसा होता है कि ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि वो विवाह भंग करने का इरादा रखता है। इला में पति अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध न बनाने की शपथ लेता है। यदि ये 4 महीने तक जारी रहता है और 4 महीने की समाप्ति के बाद विवाह अपूर्णीय रूप से भंग हो जाता है, जिहार भी एक रचनात्मक विवाह विच्छेद है। इस तरीके में पति अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ या बहन से करता है। ऐसी तुलना के बाद पति 4 महीने तक अपनी पत्नी के साथ सहवास नहीं करता। 4 महीने की समाप्ति पर जिहार पूरा हो जाता है, लेकिन विवाह स्वयं भंग नहीं होता। जिहार पूरा होने के बाद पत्नी न्यायिक विवाह विच्छेद के लिए अदालत जा सकती है और वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए भी अदालत जा सकती है। यदि पति उक्त अवधि के भीतर सहवास फिर से शुरू करके जिहार को वापस लेना चाहता है तो पत्नी तलाक की मांग नहीं कर सकती। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत एक मुस्लिम पत्नी अपने पति से तलाक प्राप्त करने के लिए किन आधारों पर दावा कर सकती है? यह अधिनियम मुस्लिम पत्नी के लिए वैवाहिक राहत के संदर्भ में एक ऐतिहासिक कदम माना जा सकता है। पत्नी के तलाक के अधिकार जो इस्लामी कानून की गलत व्याख्या और गलतफहमी के कारण अदालतों द्वारा उसे नकार दिया गया था, इस अधिनियम के तहत उसे बहाल कर दिया गया। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की मुख्य विशेषताएं। धारा 2 के अनुसार मुस्लिम कानून के तहत विवाहित महिला को अपने विवाह के विच्छेद का आदेश प्राप्त करने का अधिकार होगा यदि एक या अधिक आधार मौजूद हो। इस धारा का लाभ उस पत्नी को मिल सकता है चाहे उसका विवाह अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में हुआ हो। अधिनियम के तहत विवाह विच्छेद के लिए निर्धारित आधार निम्नलिखित है। 1. पति 4 वर्षों की अवधि के लिए लापता होना। 2. पति द्वारा पत्नी का 2 वर्षों तक भरण पोषण न करना। 3. पति का 7 वर्षों के लिए कारावास। 4. पति द्वारा 3 वर्षों तक वैवाहिक दायित्वों का पालन न करना। 5. पति की नपुंसकता। 6. पति की पागलपन, कुष्ठरोग या यौन रोग। 7. पत्नी द्वारा यौन विकल्प। 8. पति द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता। 9. मुस्लिम कानून के तहत विवाह विच्छेद के लिए मान्य कोई अन्य आधार। विस्तृत आधार। 1. पति 4 वर्षों के लिए लापता। धारा 2 सब क्लॉज 1। यदि पति लापता है और 4 या अधिक वर्षों से उसका पता नहीं है तो पत्नी विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर कर सकती है। धारा 3 के तहत पत्नी को अपने रिश्तेदारों का पूरा विवरण देना होता है। यदि अदालत संतुष्ट हो जाती है कि पति के रिश्तेदारों को भी 4 या अधिक महीनों से उसका पता नहीं है तो विवाह विच्छेद का आदेश पारित कर सकती है। यदि पति 6 महीने की समाप्ति से पहले उपस्थित होता है और वैवाहिक अधिकार निभाने को तैयार है तो अदालत आदेश रद्द कर सकती है और विवाह भंग नहीं होगा। 2. पति द्वारा 2 वर्षों तक भरण पोषण न करना। धारा 2 सब क्लॉज 2। यदि पति ने 2 या अधिक वर्षों तक पत्नी की उपेक्षा की या भरण पोषण करने में असफल रहा तो पत्नी विवाह विच्छेद का आदेश प्राप्त कर सकती है। हर पति का कानूनी दायित्व है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। यदि वो ऐसा नहीं करता तो पत्नी राहत मांग सकती है। 3. पति का 7 वर्षों के लिए कारावास। धारा 2 सब क्लॉज 3 पढ़े 7 में खंड ए।
यदि पति 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा काट रहा है तो पत्नी अदालत से विवाह विच्छेद का आदेश प्राप्त कर सकती है। ये अधिकार सजा के अंतिम होने की तारीख से शुरू होता है, इसलिए अपील की तारीख समाप्त होने या अपील खारिज होने के बाद ही आदेश पारित किया जा सकता है। 4. पति द्वारा 3 वर्षों तक वैवाहिक दायित्व का पालन न करना। धारा 2 सब क्लॉज 4। यदि पति बिना किसी उचित कारण के 3 वर्षों तक वैवाहिक दायित्व निभाने में असफल रहता है तो पत्नी विवाह विच्छेद का अधिकार रखती है। मुस्लिम कानून के तहत पति के कई वैवाहिक दायित्व है, लेकिन इस खंड के लिए केवल उन दायित्वों पर विचार किया जाता है जो धारा 2 के अन्य खंडों में शामिल नहीं है। यदि पति के पास उचित कारण जैसे पत्नी की बीमारी है तो पत्नी इस आधार पर तलाक नहीं मांग सकती। 5. पति की नपुंसकता। धारा 2 सब क्लॉज 5। पत्नी पति की नपुंसकता के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए मुकदमा कर सकती है। इसके लिए उसे 2 तथ्य साबित करने होते हैं। विवाह के समय पति नपुंसक था, मुकदमा दायर करने तक वो नपुंसक बना हुआ है। दोनों तथ्य साबित होने पर ही आदेश मिलता है। अदालत पति को 1 वर्ष का समय दे सकती है अपनी क्षमता साबित करने के लिए। असफल रहने पर तलाक का आदेश पारित होता है। 6. पति का पागलपन, कुष्ठ रोग या यौन रोग। धारा 2 सब क्लॉज 6। पत्नी को अधिकार है कि यदि पति पागल है या कुष्ठ रोग या यौन रोग से पीड़ित है तो वो तलाक मांग सकती है। पागलपन मुकदमा दायर करने से ठीक पहले 2 या अधिक वर्षों तक होना चाहिए। अधिनियम ये निर्दिष्ट नहीं करता कि ये ठीक हो सकता है या नहीं, लेकिन इसे असाध्य माना जाता है। कुष्ठ रोग का रूप या अवधि निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन पत्नी तलाक मांग सकती है। यौन रोग स्थायी असाध्य होना चाहिए। यदि पत्नी पति से संक्रमित हुई है तो वो तलाक मांग सकती है। 7. पत्नी द्वारा यौवन विकल्प। धारा 2 सब क्लॉज 7। ये आधार पति की गलती पर आधारित नहीं है। ये एक स्वतंत्र प्रावधान है जिसके तहत विवाह पत्नी के विकल्पों पर रद्द करने योग्य है। यदि पत्नी का विवाह उसके पिता या अन्य अभिभावक ने उसकी अल्पायु में कराया था तो वो इसे भंग कर सकती है। 8. पति द्वारा क्रूरता। धारा 2 सब क्लॉज 8। यदि पति पत्नी के साथ क्रूरता करता है तो पत्नी तलाक मांग सकती है। इस अधिनियम ने क्रूरता की परिभाषा को विस्तृत किया है, जिसमें मानसिक यातना भी शामिल है। 9. मुस्लिम कानून के तहत कोई अन्य मान्य आधार। धारा 2 सब क्लॉज 9। ये एक अवशिष्ट खंड है जिसके तहत पत्नी उस आधारों पर तलाक मांग सकती है जो इस धारा में शामिल नहीं है, लेकिन मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत मान्य है। तलाक उल बिद्दत, इरिवोकेबल और तलाक उल बेन। इट इज डिसअप्रूव्ड मोड ऑफ तलाक और डिवोर्स। A peculiar feature of this talaq is that it becomes effective as soon as the words are pronounced and there is no possibility of reconciliation of the parties. Under the Shia law, an irrevocable talaq is not recognized. It is evident that in the irrevocable talaq, the emphasis is upon the husband's intention of irrevocable talaq. He may use any formula which makes it clear that the husband intends to dissolve the marriage irrevocable. Besides talaq, the Muslim husband can repudiate his marriage by 2 other modes, ila and zihar. Ila and zihar. Ila and zihar are the constructive divorce by a husband. The husband does not expressly repudiate the marriage, but the conduct of the husband is of such nature that it is concluded that he intends to dissolve the marriage in ila. The husband takes an oath not to have sexual intercourse with his wife. If this is followed for a period of 4 months, after the expiry of 4 months, the marriage dissolves irrevocably. Zihar is also constructive divorce. In this mode, the husband compares his wife to his mother or sister. After such comparison, the husband does not cohabit with his wife of 4 months. On the expiry of 4 months, zihar is complete, but the marriage as such
does not dissolve after completion of zihar, the wife may approach the court for a judicial divorce and also may go to the court for restitution of conjugal rights. Where the husband wants to revoke zihar by resuming cohabitation within the said period, the wife cannot seek divorce. What are the grounds on which a Muslim wife can claim divorce from her husband under the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939? This act may be regarded as a landmark in respect of matrimonial relief to a Muslim wife. The wife's right of divorce, which was denied to her due to misinterpretation and misconception of Islamic law by the courts, was resorted to her under the Act. Silent features of the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939. Section 2 of the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 provides that a woman married under the Muslim law shall be entitled to obtain a decree for the dissolution of her marriage on any one or more of the grounds. The benefits of this section may be given to a wife whether her marriage was solemnized before or after the commencement of the Act. The specified grounds for dissolution of marriage under this Act are as follows. 1. Husband missing for a period of 4 years. 2. Husband's failure to maintain his wife for a period of 2 years. 3. Imprisonment of the husband for a period of 7 years. 4. Husband's failure to perform marital obligations for 3 years. 5. Husband's impotency. 6. Husband's insanity, leprosy or venereal diseases. 7. Option of puberty by wife. 8. Cruelty of wife by the husband. 9. And any other ground which is recognized as valid for the dissolution of marriage under the Muslim law. Husband missing for a period of 4 years. According to Section 2 Subclause 1 of the Act, if the husband is missing and his whereabouts are not known for a period of 4 or more years, the wife may file a petition for the dissolution of her marriage under Section 3 of the Act. The wife is entitled to give complete details of her relatives. The court, after fully getting satisfied that nobody of his relatives know the whereabouts of the missing husband for 4 or more months, the court could pass a decree for dissolution of marriage, and if the husband appears before the expiry or 6 months and is prepared to perform his conjugal rights, then the court may set aside the order passed and the marriage is not dissolved. Husband's failure to maintain his wife for 2 years. According to Section 2 Subclause 2 of the Act provides that if the husband has neglected or failed to maintain his wife for 2 or more years, the wife is entitled to obtain a decree for the dissolution of marriage. It is a legal obligation of every husband to maintain his wife. If he fails to do so, the wife may seek imprisonment of the husband for 7 years. Section 2 Subclause 3. Read with the provision A. Lays down that a wife is entitled to get her marriage dissolved by an order of the court of law if her husband is imprisoned for a period of 7 years or more. The wife's right to judicial divorce on the ground begins from the date on which the sentence has become final. Therefore, the decree can be passed in favor only after the expiry of the date for appeal by the husband or after the appeal by the husband has been dismissed by the final court. Husband's failure to perform marital obligations for the period of 3 years. Section 2 Subclause 4 of the Act provides that the wife is entitled to dissolution of her marriage if her husband fails to perform his marital obligations for a period of 3 years without any reasonable excuse. There are several matrimonial obligations of a husband under Muslim law, but for the purpose of this clause, the husband's failure to perform only those conjugal obligations may be taken into account which are not included in any of the clauses of Section 2 of this Act. If the husband fails to exercise the marital obligations without justification for at least 3 years, the wife is entitled to get a decree for dissolution of marriage. But if there is a reasonable ground for the husband for not exercising the matrimonial obligations, for example like wife's illness or any other reason,
then the wife cannot dissolve the marriage under this clause. Husband's impotency. Under section 2 subclause 5 of the act, the wife may sue for dissolution of marriage on the grounds of husband's impotency. For a wife to prove this, she has to convince the court on two facts. Firstly, that the husband was impotent at the time of marriage. Secondly, that he continues to be impotent till the filing of the suit. The wife can get decree only if the two facts are fully established before passing order. The court may give the husband 1 year's time to prove his potency and file an application for it. If the husband fails to do so, the court shall pass the decree of divorce. Husband's insanity, leprosy or venereal diseases. Section 2 subclause 6 of the act entitles the wife married under the Muslim law to obtain a divorce on the grounds that her husband is insane or is suffering from leprosy or venereal diseases. The husband's insanity must be for 2 or more years immediately presenting the presentation of the suit. But the act does not specify whether the unsoundness of mind should be curable or incurable. But it is submitted that the insanity of the husband should be incurable. Leprosy, the act has not specified the form nor its duration. It could take stand in favor of the wife for seeking divorce. Venereal disease must be permanent one, that is incurable. If the wife is entitled to get infected by the husband, she is entitled to seek divorce. Option of puberty of wife. This ground for the dissolution of marriage is not based on any fault of the husband. It is an independent provision under which a marriage is voidable at the option of his wife under section 2 subclause 7. A wife may dissolve her marriage if her marriage was contracted by her father or any other guardian during her minority. Cruelty by her husband. Section 2 subclause 8 provides that a wife can sue for divorce if her husband treats her with cruelty. This act has now enlarged the scope of cruelty by husband. Cruelty under this act also includes mental torture. Under Muslim law, under section 9, the residuary clause under which a wife may any other ground which is recognized as valid for the dissolution of the marriage seek dissolution of her marriage on any ground which could not be included in this section but is recognized under the Muslim personal law. The wife could invoke this ground for seeking divorce under this clause.